and you're watching CONSORT with Sakshi. So yeah, I know I'm posting this video after a very long time and I'm really sorry about that, but क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है. जॉब घर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है. कोशिश करती हूँ टाइम निकालने की, बट स्टिल निकाल नहीं पाती हूँ. आई एम रियली सॉरी, बट या अब फेस्टिव सीज़न है तो हॉलीडेज भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँ एंड या वर्क इन प्रोग्रेस. तो इस फेस्टिव सीज़न में मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, लाइक नवरात्रि लुक एंड या ऑफ कोर्स दिवाली लुक और दशहरा, और बहुत सारी हैक्स भी हैं. सो या वो तो जब आप वीडियो देखोगे पता चल जाएगा. बट let's talk about today's video. So today I am going to tell you about how you can make your French ponytail at home. बेसिकली क्या है कि अभी मैंने अपना हेयर कैरेक्टर कराया तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो रखे हैं. तो मैंने ट्राई किया बनाने का, बनाया भी, बट स्टिल ये कि बहुत जल्दी वो मतलब अभी सिल्की हो रहे हैं तो खुल जाती है छोटी. तो बट या मैंने बताया है कि आपको वीडियो में कि आप कैसे बना सकते हैं, उससे आपको थोड़ा गाइड मिल जाएगा. बाकी अगर आपको अपनी पॉनिटेल लॉन्ग टाइम तक स्टे रखनी है तो आप अपना यूज़ कर सकते हैं हेयर स्प्रे, जिससे आपके जो पॉनिटेल बनाएंगे वो लॉन्ग स्टे करेगा. सो या लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. होप यू गाइस लाइक माई वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी. मैंने बहुत क्लियरली पॉइंटल नहीं बनाया, बट आई टोल्ड यू बिफोर कि मेरी जो मतलब अभी मैंने हेयर केराटिन कराया तो बहुत ज़्यादा ही सिल्की हो रहे हैं. मैं अभी कुछ हेयर प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे हेयर स्टाइलर्स ने मुझे सजेस्ट किया है. सो या I hope you like my video and please do like my video and share my channel and subscribe my channel and share as much as you can. It was a short video guys, and I'll be back soon. Bye bye, take care and happy Navratri.